We will perform the identification test of the lipids. So first of all, we have to know about what is lipids. Lipids are the organic compounds that are insoluble in the water. They are include fats, wax, oil, and the hormones. They are one of the main structural component of the living cells, along with the carbohydrate and the proteins. जो आपकी सेल्स होती है, लिविंग सेल्स है, ये किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड्स की भी बनी होती है, साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की भी बनी होती है, ठीक है? सो लिपिड्स आर द फैटी compounds that perform a variety of the function in your body. They are a part of your cell membrane, as we discussed earlier, help to control what goes in and out of your cell. कोई भी चीज आपके सेल के अंदर कौन सी आएगी या मतलब सेल से बाहर जाएगी, ये लिपिड ही कंट्रोल करते हैं. दे हेल्प विद द मूविंग एंड द स्टोरिंग एनर्जी. जो लिपिड्स होते हैं ये आपकी एनर्जी स्टोर भी करते हैं, साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन्स को और हार्मोन्स को. हैविंग टू मच लिपिड्स अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है, बीपी राइज हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है, ठीक है? सो वी हैव टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. So first of all, we have to perform the solubility test. So in the solubility test, we have to check the solubility of the lipids in the water and in the organic solvent. So पहले ये टेस्ट ट्यूब लेंगे. So टेस्ट ट्यूब में पहले हम जैसे लिपिड कोई भी ये ऑयल ले लेंगे, इसमें कैस्ट्रोल ऑयल है, ठीक है? सो ऑयल सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे लिपिड्स की. तो आप मिनिमम सी क्वांटिटी इसमें टेस्ट ट्यूब में डालोगे और उसके बाद पहले इसको वाटर के सॉल्युबल करके देखोगे कि ये वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी है कि नहीं. इससे मैं So as we observe that the solubility of the lipids, it is insoluble in the water. But if we have to check the solubility of lipid in the organic solvent such as the chloroform or the acetone, it is soluble in the organic solvent like the ether, acetone or the chloroform. First of all, we have to take the test tube and we have to add the castor oil in the test tube. Then we have to add acetone in the test tube. Here we can see that the solubility of the lipids are soluble in the acetone. जो lipids होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में लिपिड जो की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर. Now we have to perform the another test which is known as the Grease-Spot test. In the Grease-Spot test, we have to take a drop of sample in the ether or the chloroform. So this is the sample. हम ये टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम पहले सैंपल डाल देंगे. तो सैंपल के बाद फिर ऐड करेंगे इसके बीच में क्लोरोफॉर्म या ईथर ऐड कर देंगे. उसके बाद ईथर और क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद फिल्टर
उसकी जो ड्रॉप्स होगी हम फिल्टर पेपर में लेंगे। दिस इज अ फिल्टर पेपर and we have to put some drops of this sample on the filter paper. As we can see that the translucent strain appear on the filter paper. This is a translucent, like window is the transparent where we observe both sided. This is the translucent appearance. In the third test, in the litmus test, a drop of sample in the ether or the chloroform is placed and the filter paper on the filter paper and allowed to dry. This is a sample. We have to take the sample in the chloroform and we have to put this sample on the litmus paper. We have to put the sample on the litmus paper and the observation, there is a no color change on the litmus paper. See, there is a no color change on the litmus paper when the sample is put on the litmus paper. These are the three identification tests which we have to perform. First of all, we have to perform the solubility, where we have to check that the solubility of the lipids, it is soluble in the organic solvents such as the ether and the chloroform. And then we have to perform the grease spot test, where we have to check the translucent appearance on the filter paper. Then we have to perform the third test, which is known as the litmus test, where we have to put the drops of sample on the litmus paper and the observation, there is a no color change on the litmus papers. There are many other tests like the sponification test, Sudan test, and the dichromacy test. We have to perform in the next class. So thank you very much.